यहाँ पे आई एक्सप्लेन यू डिफरेंट sections जो कि डैशबोर्ड में होते हैं. Then now obviously we need to have the views at the sheet level, and then obviously as per the requirement we just need to drag them and they will be a part of our dashboard. अब the primary reason or the specifically why do we create dashboard is to bring some interactivity layer. So when I say interactivity layer, it's just that let's say किसी को ना बस California, so now let's say I am the category manager for California, okay, and I am just interested in seeing for California what is the comparative view of sales across category and subcategory and the let's say the pie chart as well. Okay, so I am not interested in seeing the whole set of data. I am just interested to view the data for the okay of the region for which I am the category manager. So primarily मैं क्या चाहता हूँ कि if मेरे पास ये डैशबोर्ड आए, I simply click on this California. Accordingly ये दोनों views भी अपने आप अपडेट हो जाए for California region. ठीक है? So this is how I try to make them interactive. I hope the problem statement is clear. है ना? अभी ये क्या कर रहा है? It is showing the view for all the states of US. लेकिन let's say someone who is for California, he or she is interested only to see the data for California, or someone who belongs to, let's suppose, any of these states. So primarily if he clicks on it, accordingly the other graphs would also get updated for that particular state only. So वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? So that level of interactivity we can have in our dashboard by adding actions. ठीक है? So that is the main use of or primary reason behind using a dashboard. ठीक है? So that we make it interactive. With respect to the usage, so there are three main actions which we use in dashboards in Tableau. ठीक है? वो आता कहाँ से? We simply need to go to dashboard और यहाँ पर हमें actions का एक option दिखता है. Once we click on it, ठीक है, एक यहाँ पे एक window open होगा and it says add action. So सबसे पहले हमें Tableau को बताना है what is that action type which we are trying to add. ठीक है? So here if you see, so these three are the main which are mostly used: filter, highlight, and go to URL. So one by one we will see the usage of each. सबसे पहले हम we will select the filter action. ठीक है? I want to add a filter action. So आप यहाँ पे click करोगे. Okay. So the first thing which obviously Tableau will ask you is what is the name of the action. So primarily as we have seen, right, calculated field create करते हैं, कुछ भी create करते हैं. सबसे पहले it asks the name of the particular field. So अभी let's say we will simply give it state view. Okay, we can give it any of the name as per our requirement. Second thing is we have to let Tableau know what are all the source sheets. So primarily हम source sheets and target sheets, this we have to let Tableau know. So source sheets क्या होगा? Primarily with respect to कि where should these filters, on which sheets this filter should get added, and target sheet is primarily the destination sheets, on which sheets this when we apply this filter, so what all sheets should get affected. So source is primarily हम कहाँ पे वो filter apply करेंगे, and target is destination कि वो changes हम कहाँ पे those changes should get applied. ठीक है? So अभी के लिए I will simply select the source sheet as profit into state, because obviously this profit into state sheet, it only has the state info. ठीक है? As per the requirement you can select multiple sheets as well. अभी के लिए I will simply select this profit into state as the source sheet, and target sheets I will select all of the sheets as target. So primarily मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, it should get applied across all the sheets. अब one more thing which we have to let Tableau is the run action on. So there are primarily three types of action, which is hover, select, and menu. ठीक है? And as a best practice हम क्या करते हैं whenever, so there are three actions, right? एक होता है filter, एक होता है highlight, एक होता है हमारा go to URL. Filter action के लिए the best case scenario is we use action type as menu. For highlight we choose action type as hover, and for go to URL we select action type as select. This is one of the best practice which is followed across industry. ठीक है? तो we'll simply say, मैंने सबसे पहले हमें filter action add करना था. I simply said state view नाम दे दिया. Source sheet हमें बता दिया कि वो action, ये वाला action कहाँ पे add होना है. And then as once we apply this action, तो कौन कौन से हमारे destination sheets होंगे, मतलब किसके sheet पे वो जाके apply होगा, और ये effective कैसे होगा जब हम hover करेंगे, select करेंगे या menu करेंगे. Sorry, or as a menu type. So we have simply selected as menu type. ठीक है? Once done, you simply click on OK.
यहाँ पर ये एक्शन हमें दिख रहा है, ठीक है। अगेन वी क्लिक ऑन ओके, जॉब इज डन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इफ यू क्लिक हियर यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, सिंपली इफ यू क्लिक हियर यू वोंट बी एबल टू सी एनी ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। बट द मोमेंट यू क्लिक हियर नाउ यू सी दिस एक्शन बीइंग एडेड, जो हमने एक्शन यहाँ पे अप्लाई किया था ना, स्टेट व्यू। और चूंकि हमने बस प्रॉफिट इनटू स्टेट को बस सोर्स शीट में सेलेक्ट किया था, सो दैट इज द रीजन जब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इट इज बीइंग डिस्प्लेड एज अ मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ मेन्यू दिख रहा है। यही अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मोमेंट जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली द चेंजेस विल अप्लाई। लेकिन मैंने मेन्यू इसलिए दिया, सो वी आर गिविंग द एंड यूजर एन ऑप्शन, primarily a flexibility. If you need, you can apply this action. If you do not need, you do not need to apply this action. लेकिन ये क्योंकि हमने सोर्स सीट्स पे बस प्रॉफिट इनटू स्टेट सेलेक्ट किया है, इसलिए ये वाला हमें यहाँ पर या फिर यहाँ पर नहीं दिखेगा। इट विल ओनली बी विजिबल, इट ओनली गेट अप्लाइड ऑन टू प्रॉफिट इनटू स्टेट। Now let's see what change happened. Once I click on it, so automatically your all the graphs will get updated. Okay, so you select any of the regions. Accordingly, you click on this action and you will able to see the view as well. ठीक है। So now अभी क्या हो रहा है? So while this meaning simple है कि someone was only interested to see the data for this particular state जो हमने select किया है, उसी state का बस उसको चाहिए था। What is the, let's suppose the sales across category and subcategory, and what is the percentage distribution किस category के across, मतलब obviously across multiple categories or subcategories, what is the percentage distribution of the sales. तो accordingly वो value ये show कर रहा है. Someone wants to see only for let's suppose California, तो for California only ये बता रहा है कि क्या percentage distribution है and what is the sales across category and subcategory. So meaning क्या हो रहा है, simple है कि हमारे पास data सब कुछ है, लेकिन in the dashboard we can have this interactivity level. I hope this is clear. Any questions? Shilpa and Shrestra, any questions? ठीक है। एक तो ये था, सो विच वाज ऑब्वियसली पर्टेनिंग टू फिल्टर एक्शन, कि हम कैसे फिल्टर एक्शन ऐड करते हैं, हम क्या उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड ऑब्वियसली हाउ डज इट गेट्स अप्लाइड। The second action is which is very rarely used, but then since we have this action that is called that is we have is the simply go to actions, and then here we will have a highlight action. So highlight is very simple. तो मैं इसको name obviously I'm just keeping the name as highlight one only. Source भी मैंने सब कुछ destination भी सब कुछ रखा है। And for highlight as I mentioned हम action type as hovers रखते हैं, ठीक है। We always tend to keep action type as hover. हमने ये किया, OK पे क्लिक किया, obviously it got added here highlight one के नाम से, you click on OK. So अब जैसे जैसे आप highlight इस पे क्लिक करोगे ना, since it says hover, so once you hover accordingly your views will get updated, ठीक है। So this is what the highlight action is all about. This is very rarely used. Now one of the most important action which is again very widely used is obviously the go to URL action, ठीक है। Now before that I want you guys, ठीक है, to help me to create a view, ठीक है। So I will simply load one more data here, ठीक है, which is the global superstore. अब ये global superstore और sample superstore में फर्क क्या है? Very simple. While your sample superstore it only has data for US region, हमने देखा है right कि sample superstore में बस data था for country US. Global superstore is having data across the globe, so there it's not only restricted to US, it has the data for other countries as well. US, Australia, Germany, New Zealand, France, China, मतलब ये सुपर स्टोर है which is globally located, उसका डेटा हमारे पास आया है। This is the main difference between sample superstore and global superstore. With respect to fields, their fields are same more or less, ठीक है। Obviously you will see some fields additional, इसमें market and all, but obviously most of the fields are same. अब यहाँ पर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आई वांट टू क्रिएट अ व्यू, ठीक है। वी आर हैविंग दिस कंट्री, वी आर हैविंग दिस स्टेट एज वेल, यहाँ पर एक स्टेट कॉलम भी होगा। सो हमें एक व्यू क्रिएट करना है विच विल शोकेस ओनली फॉर इंडिया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द डेटा ओनली फॉर इंडिया। इंडिया का हमें यहाँ पे यूजिंग अ मैप वी हैव टू क्रिएट अ व्यू जो कि ये बताए इंडिया कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स का व्हाट इज द सेल्स वैल्यू, एंड दिस यूजिंग दिस ग्लोबल सुपरस्टोर डेटा एज योर बेस डेटा और एज योर रॉ डेटा. So you have to create a view which will showcase for India these are the states and this is the sales value across different states. I hope the question is clear. कैसे बनाएंगे? Then give it a try. जो भी मतलब अभी तक समझा है, जो भी
आ रहा हो, क्या ही कर सकते हैं। नहीं, वेरी सिंपल, हमने किया भी था पहले। यू सिंपली टेक द कंट्री, यहाँ पे ऐड कर दो। अब चूंकि ग्लोबल सुपर स्टोर इट इज हैविंग डेटा फॉर मल्टीपल कंट्रीज, हर एक कंट्री यहाँ पे प्लॉट हो रही है, ठीक है। अब सिंस वी नीडेड द डेटा ओनली फॉर इंडिया, तो आप क्या करोगे, इस कंट्री को यू विल ऐड इट टू द फिल्टर्स एज वेल, यहाँ से नन, एंड देन यू विल सेलेक्ट ओनली इंडिया, ठीक है। सो वी विल रिस्ट्रिक्ट इट ओनली फॉर इंडिया, अप्लाई, ओके, बस इंडिया का मैप आ रहा है, ठीक है। हियर वी आर गेटिंग वन डेटा पॉइंट, ठीक है। वेरी सिंपल, नाउ यू नीडेड दी स्टेट, सिंपली टेक दी स्टेट एंड ऐड इट हियर एज वेल। हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एज पर योर info which is available in your data, different states are here. Now let's have them as a label as well. So now you are able to see the different states. If you want to showcase sales, you can add the sales also onto the labels. ये clear है? Obviously this you can't have on sample superstore, क्योंकि sample store was US का data था। That is the reason मैंने क्या किया, global superstore को add किया, और फिर उस पर हमें इस पास इंडिया का चाहिए था। I applied a filter on India and then I consider all the states onto the label and I also added them in the graph as well. I hope this is clear. Any question? ठीक है। अब हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई आई क्रिएटेड दिस व्यू, बिकॉज द बिजनेस वांट्स अस द मोमेंट वी क्लिक ऑन एनी ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, इसका विकीपीडिया पेज ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन राजस्थान, तो राजस्थान, आई वांट टू नो द डिटेल्स अबाउट राजस्थान, सो राजस्थान का विकी पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन गुजरात, गुजरात का विकी पेज ओपन हो जाए। नाउ विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस कंटेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर तो चलो मैं ये एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, बट अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये कैसे यूज होता है। वेरी सिंपल, नाउ लेट्स सपोज वी आर वर्किंग फॉर ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी, जहाँ पर स्टेपल्स एक बहुत बड़ी कंपनी है विच इज अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, विच प्रोवाइड दी ऑफिस सप्लाईज के डिफरेंट आइटम्स, पेंसिल्स, ऑब्वियसली प्रिंटर्स, स्टेशनरी एंड ऑल दैट। अब उस पे क्या होगा ना कि द क्लाइंट हैज आस्क्ड अस और विल आस्क यू टू क्रिएट अ व्यू सिमिलरली, एंड क्या होगा ना, प्रोडक्ट आईडीज होंगे। द मोमेंट यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट आईडीज, उस प्रोडक्ट आईडी की इंफॉर्मेशन ओपन हो जानी चाहिए, कि इसका क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंटेड प्राइस है एंड ऑल दैट। सो कैसा ये दिखता है, ठीक है, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन। तो इस तरीके का हमें इनसाइट, मतलब प्राइमरली लेवल ऑफ इनसाइट्स वी हैव टू ब्रिंग एंड देन वी हैव टू मेक देम इंटरैक्टिव, ठीक है। तो वहां पर यही ऐसे ही करना होता है जैसे अभी मैं करूँगा। सो वहां पर भी सिंपल है कि आप एक प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करोगे और उस प्रोडक्ट आईडी का प्राइमरली स्टेपल्स का पेज ओपन हो जाए। सो स्टेपल्स इज ऑब्वियसली मेंटेनिंग दैट पेज ओवर इट्स वेबसाइट। अभी के लिए क्या है कि सिंपली वी क्लिक ऑन एनी ऑफ दी स्टेट, उस स्टेट का विकी पेज ओपन हो जाए। So simply if I go to the Google Chrome, let's say, and if I say Delhi Wiki, okay, so ये देखो दिल्ली का विकीपीडिया पेज के लिए, so we got to know this is the URL, ठीक है। So I will simply copy this, ये काम हमें करना होता है। You will go to Tableau और यहाँ पर आप जाओगे, you will click on to the worksheet, यहाँ पर भी also you have the actions, you click on actions, you say action go to URL, and then obviously आप इस अब मैंने इसका नाम लेट्स सपोज हाइपरलिंक 1 ही अभी रखा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि जब हम गो टू यूआरएल लेते हैं, वी सिलेक्ट एक्शन टाइप एज सेलेक्ट, और यहाँ पर हमने वो यूआरएल टाइप कर दिया, ठीक है। द यूआरएल विच नीड्स टू बी ओपन व्हेन वी क्लिक और व्हेन वी सिलेक्ट एनी ऑफ द वैल्यू एंड आई क्लिक ऑन ओके। ये भी एक्शन यहाँ पर ऐड हो गया, हाइपरलिंक 1, आई क्लिक ऑन ओके। नाउ यू सी द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिल्ली, जैसे मैंने क्लिक किया, सो नाउ यू सी दिल्ली का विकी पेज ओपन हो गया। गो बैक टू टैब्लू, क्लिक ऑन राजस्थान, ठीक है, अगेन अ विकी पेज विल गेट ओपन। गो बैक टू अगेन टू लेट्स सपोज महाराष्ट्र, अगेन अ विकी पेज विल गेट ओपन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मैं किसी भी स्टेट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, बार बार वो दिल्ली का पेज ही ओपन हो रहा है। इट्स नॉट दैट कि मैंने जब महाराष्ट्र पे क्लिक किया तो महाराष्ट्र का पेज ओपन हुआ, राजस्थान पे क्लिक किया राजस्थान का पेज ओपन हुआ। एवरी टाइम पेज ओपनिंग इज ऑफ दिल्ली स्टेट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, जो हमने यहाँ पर एक्शन ऐड किया ना, दिस एक्शन में द यूआरएल सेज, वैसे वी कैन एडिट इट, इट सेज wiki_delhi। अब ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि जब भी आप किसी भी यूआरएल एक्शन पे काम करोगे ना, हमेशा एक जो एंटायर यूआरएल होगा ना, सर्टेन पोर्शन विल बी फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर पोर्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू योर वेरिएबल नेम या फील्ड नेम, जो कि चेंज होते रहता है, तो हमें उसको पकड़ना है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे फिर से जाऊँ, आई गो टू दिस हियर एंड इफ आई से राजस्थान विकीपीडिया प्लीज, ठीक है। तो ये देखो
दिस इज द राजस्थान का विकिपीडिया पेज एंड लेट्स से दिस इज द दिल्ली का विकिपीडिया पेज, ठीक है। इफ यू कंपेयर बोथ दीज, यहाँ तक जो यूआरएल है सो दैट इज सेम, ठीक है। यहाँ तक इट्स सेम फॉर दिल्ली ऑल्सो, इट्स सेम फॉर राजस्थान ऑल्सो, ओनली द चेंज इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। राजस्थान जब आ रहा है तो राजस्थान का पेज ओपन हो रहा है, दिल्ली जब आया दिल्ली का पेज आ रहा है, ठीक है। तो यही चेंज हमें यहाँ पर करना होगा। सो वी विल हैव टू लेट टैबलू नो कि यहाँ तक तो ठीक है, यू consider the path or you consider this URL. लेकिन for the last we will simply call that value from our field. So वो field हमारा value क्या होगा, statement. We have a state field, right? उसी state को हमने यहाँ पर भी add किया in my view also. तो हम यहाँ पर उसको हमने एक dynamic बना दिया. So primarily instead of the constant value we just made it dynamic, ठीक है। So मैंने state को यहाँ से call कर लिया from our data. So obviously this field needs to be available in your data. If it's not available in your data, then there is no way to work on it. सो वंस दैट फील्ड इज अवेलेबल, हमें पता है यहाँ तक तो चीजें से मैं बस यहाँ पर वैल्यू डिफर हो रही है, तो उस लास्ट फील्ड को मैंने कॉल कर लिया अपने डेटा से। आई से ओके, नाउ वी विल गो बैक टू टैबलू। नाउ द मोमेंट यू क्लिक ऑन एनी ऑफ दी स्टेट, सो नाउ क्योंकि आपने गुजरात पे क्लिक किया ना, सो गुजरात पेज विल ओपन। सो सिंस वी हैव सेलेक्टेड द एक्शन टाइप एज सेलेक्ट, सो टैबलू इज डूइंग द जॉब फॉर अस। सो बेसिस द वैल्यू व्हिच वी आर सेलेक्टिंग, उसके बेसिस पे टैबलू उसकी वो वाली वैल्यू पास कर रहा है इंस्टेड ऑफ दैट स्टेट वैल्यू, and accordingly we are able to see the page of that particular state and our job is done. Clear tha? Any questions? No sir. ठीक है। अब now let's say we simply now go to again to I go to a dashboard and I simply add this one जो भी हमने बनाया ना, so I simply add this. अब client obviously can come to us and they say hey, obviously what is happening now, I click on it and it takes us to Wikipedia page, obviously meaning I'm going to a Google Chrome, a different interface. So can I have that information embedded in dashboard only? So meaning वो चाहता है कि ये यहाँ से मैं Google Chrome पे जा रहा हूँ, Google Chrome से वापस Tableau में आ रहा हूँ। So चाह रहा है वो कि can we have that Wikipedia page available in my dashboard only? So no need to go to Google Chrome and come back instead of hovering here and there. So yeah, we can do that. उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? So you simply copy the, let's suppose the URL, ठीक है? Job is done, okay, and then Tableau has this web page object, ठीक है। आप इस web page object को let's say हमने इसको नीचे ऐड कर दिया, I will simply ask you to mention the URL. So मैंने simply वो URL जो हमने action ऐड किया था उसी मैंने URL को यहाँ पे paste कर दिया and I say okay. So now what will happen, the moment you click on Rajasthan, it will not take you to a Google Chrome page. So यहीं पे you will be able to see the information pertaining to this particular state. Someone clicks on Odisha, he will or she will be able to see the Wikipedia page of Odisha here also. Okay, so this change we can bring by using this web page object. So primarily हम क्या कर रहे हैं, dependency with respect to another interface going to Google Chrome, coming back here, hovering here and there को हमने हटा दिया by adding this web page object. And this is obviously requirement specific. जिसको जैसा चाहिए होता है, we obviously implement it accordingly. But then this web page image obviously used to have that level of information embedded in your dashboard only. So primarily available in your Tableau interface only. ठीक है, I hope this is clear. Yes sir. Cool. So now let me take you through one interesting topic, which is the geographical fields. Okay. So what happens whenever we load any of the data, ठीक है। So अभी हमने we have this global superstore, we have the sample superstore. So अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक, obviously जब भी हम डेटा को लोड करते हैं तो two fields are always added. So two additional fields, one is your measure names and one is your measure values, ठीक है। measure names hold the names of all your measures, measure values में सारे के सारी measures की value होती है। अब apart from these two additional fields, Tableau also adds, there are two also additional fields which gets added, but then there is some condition. Those two fields are, let me tell you first, वो होता है हमारे latitude and longitude. लेकिन ये field आपको तभी add होंगे जब आपके data source में at least there is one geographical field. Unless and until कोई भी एक geographical dimension नहीं होगा. So when I say geographical dimension, that is obviously your city, country, state, postal code, ठीक है। तो जब तक unless and until कोई geographical field नहीं होगा, we will not see this latitude longitude as a part of my data.
लेकिन the moment Tableau finds at least one geographical field in our data, the latitude and longitude gets added. अब very simple why latitude longitude gets added because they are also a data point on a globe. और हर एक जो डेटा एक पॉइंट होता है जब भी हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, so they need to have an x and y coordinates. So then for obviously for these geographical fields, latitude and longitude are the x and y coordinates. So that is the reason, just to summarize, whenever you will have at least one geographical field, Tableau will add this longitude and latitude field so that we can plot them over the graph. Okay. The next question, how does Tableau identify if this particular field is a geographical field or not a geographical field? So Tableau में क्या है ना, there are certain reserved keywords. So if you go to this field, you will get to see geographical role. तो ये कुछ fields हैं which are obviously airport, city, country, state, zip code, postal code, जो कि reserved keywords हैं. The moment Tableau finds any of these fields in your data, it gets to know कि ये एक geographical field है, and then obviously इसका data type geographical हो जाता है, and Tableau adds the latitude and longitude field also as an additional fields in our data, so that we can plot them. ठीक है, these 2 points are clear. Yes, sir. Okay, and one more important thing, why, how we are able to see these maps. So obviously this is one of the very, you can say, best feature of Tableau. The moment you add any of the geographical field, it gives you the exact map of that particular country or state. So this service, this is just an FYI, ठीक है ना, ये हमें बस जानना है. So this service is being provided by a company which is OpenStreetMap. So you can obviously, so Tableau has partnership with OpenStreetMap. So they are the service providers for maps. So obviously जब भी हम एक Tableau install करते हैं ना, so this package is already enabled in the Tableau का जो भी different program files हैं. So this is the reason when the moment we use any of the geographical fields, we are able to see the map view because this OpenStreetMap does this work for us. So this is available as a pre-installed package inside the Tableau program files. Okay. Now, with respect to maps, one of the most interesting क्या कहते हैं use case which we will study अभी, ठीक है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना. अब क्या होगा ना, सो ये तो एक तो ये समझ में आ गया कि ज्योग्राफिकल फील्ड्स हैं, उसको हमें प्लॉट करना है, तो ऑब्वियसली वी कैन प्लॉट इट सिंपली, जो भी फील्ड चाहिए उसको ले लो, एंड वी सिंपली हैव टू फॉलो द हायरार्की. कि स्टेट यूज भी करना है तो वी विल हैव टू मेक श्योर पहले कंट्री आए फिर स्टेट आए, बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब देयर इज एम्बिग्यूटी. मैंने से एम्बिग्यूटी, एक स्टेट है जो कि कंट्री यूएस में भी है, यूके में भी है, सो देयर आर सर्टेन स्टेट्स, कॉमन स्टेट्स. अगर हम डायरेक्टली स्टेट को डाल देंगे टैब्लू, मतलब यहाँ पे ड्रैग इट, तो यू विल गेट सम एम्बिग्यूटी एरर्स, बिकॉज टैब्लू को ये समझ में नहीं आएगा कि इसको किस कंट्री में मैप करना है. सो वी ऑलवेज हैव टू फॉलो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप whenever we use a geographical field. पहले country, फिर state, फिर city, फिर postal code, इस तरीके से logic define होता है. So primarily whenever we have to plot any geographical field. अब with respect to maps, at times we get a interesting use case. जहाँ पर client क्या बोलेगा ना, so they will give you a image. So they will give you any of the image. अभी मैं एक example करूँगा. So let's assume they will give you a metro route का एक image. ठीक है? Not sure how many know are familiar with Delhi metro route. So let's say यहाँ पे there is a metro route from Dwarka to Noida city center, ठीक है. तो अब क्या होगा, so उन्होंने हमें मेट्रो रूट का मैप दे दिया, एंड देन दे विल आस्क अस टू प्लॉट द सोर्स टिल डेस्टिनेशन. क्या ओके, पहले ये स्टेशन है, फिर ये स्टेशन है, फिर ये स्टेशन, वैसे दे विल गिव यू अ डेटा. अब उन्होंने मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि दे हैव गिवन अस एन इमेज एंड दे हैव गिवन अस अ डेटा एंड दे वांट अस टू प्लॉट इट ऑनटू अ ग्राफ इन टैब्लू. तो उसको हम कैसे करेंगे? सो फॉर अभी के लिए व्हाट वी आर आई एम ट्राइंग, आई विल how we will do it with the help of an example. So they have given us this lab test data. ठीक है. Now let's say company has given us this lab test data, क्योंकि ये बता रहा है कि कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट है, इंजरी रेट क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली यू कैन से हर एक के लिए 1 है, राइट. सो ऑब्वियसली इफ वी सम दिस, तो ये बताएगा नी कि कितने पेशेंट्स है जिनका नी इफेक्ट हुआ था, कितने पेशेंट्स है जिसका रिस्ट इफेक्ट हुआ था, कितने पेशेंट्स है जिसका आई इफेक्ट हुआ था, ऑल दैट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल हैव. Ab, they want us this data to be plotted on this particular body image. So they have given us this body image. They want us to plot it. ठीक है, जो कि बताए कि ओके आई कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है जिनको जो कि they were affected on eye, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है which got affected on finger, and accordingly onto different body parts. So primarily this is the output they want from us.
डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उसे डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो एंड देन इट्स ओके कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो उस बॉडी पार्ट पे, सॉरी, on a particular body part how many patients got affected. ठीक है, so they have given us three things. One is this picture जो as a raw picture है, इसको हमें transfer करना है इसको, and we have to use this data to plot it. I hope the problem statement is clear. ठीक है, and this problem you will get most of the times while working on a project. अब इसमें हम करते कैसे हैं? Now we obviously need to understand. सबसे पहले क्या करना होगा, whenever you are being given this type of scenario or problem statement, सबसे पहले these are the steps which we have to follow. आप सबसे पहले उस इमेज पे जाओगे, जो भी आपको इमेज दिया गया है, सिंपली राइट क्लिक एंड देन वी गो टू प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाके हम डिटेल्स में जाते हैं. वी टेक द विड्थ एंड द हाइट. सो विड्थ से 360, हाइट से 649. ठीक है, सो क्विकली आई विल हैव दिस डेटा इन एन एक्सेल फाइल. कंट्रोल Z, I will say control N, sorry, I will say X and Y. So X is my 360, Y is my 649. Okay, and I will save this Excel file. I will give it a name, save as, browse, desktop. I will give it 27.5 body. ठीक है, just giving it this name. ठीक है, अब मैंने X को क्यों से, मतलब primarily what I have done, जो भी ये इमेज था, is that image. So इसका जो width था, I have considered that onto X and the height I have considered onto 649. ये आपने, you might have identified ऐसा मैंने क्यों किया है, लेकिन I will obviously let you know in detail also कि हमने क्यों width को X पे लिया, Y को क्यों 649, sorry, height को मैंने क्यों Y axis पे लिया. Now job is done. अब मैं क्या करूँगा, so we will go to now Tableau, and in Tableau here onto maps now you get to see a background images. ठीक है, तो यह इसका हमें यूज करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें उस एक्सेल फाइल को लाना होगा जिस एक्सेल फाइल में वी हैव द एक्स एंड वाई एक्सेस. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू सी द डेटा, यहाँ पर क्लाइंट ने हमें ये डेटा दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस बॉडी पार्ट का एक्स एक्सेस क्या है, इस बॉडी पार्ट का वाई एक्सेस क्या है. हमें सबसे पहले टास्क क्या है, क्योंकि हमें इसको प्लॉट करना है, एंड फॉर प्लॉटिंग ऑलवेज वी नीड टू हैव एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. So we will have to find out what is the x coordinate and what is the y coordinate of each of my body parts. Okay, उसी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं. So we simply took an Excel file. मैंने उस पे width को x पे दे दिया, height को y पे दे दिया. We will go back to Tableau. We will add that file. ठीक है, simply say yeah, and then I will simply take that particular file. Right, it was 27 something, right? Okay, so this is the file. I simply say open. This file got added here. Since it only has one sheet, so we do not have to mention कि कौन सा sheet लेना है. अगर उसमें एक ही sheet होगी Excel फाइल में, तो Tableau वो खुद ही समझ लेता है. ठीक है, now let's go to that particular sheet जहाँ पर हम ये बना रहे थे. ठीक है, so we were creating it here. Okay, यहाँ पर हम आएंगे. Now we will go to this maps. ठीक है, you will select the background images और Tableau को बताना है कि this background image जो हम बना रहे हैं, that needs to be linked to which particular Excel file, so which particular raw file. यहाँ पर आपको टैबलू हर एक फाइल दिखाएगा, जो भी फाइल्स हमारा टैबलू में लिंक्ड है, इंटरफेस्ड है. लेकिन देन वी हैव टू चूज द फाइल प्राइमरली जो हमें यूज करना है फॉर दिस यूज केस. सो आई विल सिंपली सेलेक्ट दिस फाइल, देन पॉपअप ओपन हो जाएगा वेयर इन वी विल हैव टू ऐड अ इमेज. यू सिंपली सेलेक्ट इमेज, आप उसको ब्राउज कर लो. ठीक है, सो ऑब्वियसली टैब यू कैन ब्राउज इट. यहाँ पर हम आ गए एंड यू सिंपली से ओपन. ठीक है, सो ये फाइल आ गया. दिस बॉडी इमेज गॉट एडेड हियर. अब we have to let Tableau know कि x field primarily x value कौन से field से आएगा और y value कौन से field से आएगा. x field will come from x, y field will come from y. मैंने यहाँ से y select कर लिया. Now we will understand कि मैंने क्यों width को x axis पे लिया, height को क्यों y axis पे लिया. Because very simple, the x field is primarily this one, right? So this is primarily your width. ठीक है, and height is this thing which is obviously your y axis. Very simple. So आपका जो x axis होता है, it primarily describes the width of your image. Y axis describes your height of the image. And as we move from left to right, ठीक है, so primarily इसका सबसे maximum width क्या है, 360. So as you will move, हम जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ये वैल्यू विल चेंज फ्रॉम 0 से 360. ठीक है, तो ये हम टैबलू को बता रहे हैं. इसका रेंज तुम्हें 0 से 360 लेना है. और हमारा जो हाइट होगा, एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मेरा वैल्यू विल चेंज फ्रॉम 0 to 649. ठीक है, और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टू अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग ना अब टैबलू हमें किसी भी बॉडी पार्ट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बताएगा.
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से हम जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो वैल्यू कंसीडर करो 0 से 360, जैसे मैं बॉटम से टॉप को मूव करूँ वैल्यू कंसीडर करो 0 से 649, से अप्लाई एंड देन ओके, दिस गॉट एडेड एंड यू से ओके। ठीक है, very simple. Now you will take the x onto here and you will take the y onto here. ठीक, this body part got added here. Any questions before I move to the next? If you want to repeat me on any part, do let me know. और अगर क्लियर है तो ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास जो डेटा था, जस्ट समराइजिंग अभी तक हमने जो डिस्कस किया, उस डेटा में बॉडी पार्ट था, डेट था, लेट्स से, लेकिन उसमें ये नहीं था कि हर एक बॉडी पार्ट का क्या एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या वाई कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहला टास्क हमें क्या करना होगा, क्लाइंट बोलेगा मुझे उससे कुछ नहीं है, यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड आउट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसके लिए हमें क्या किया, एक्स एंड वाई तो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली विड्थ एंड हाइट के बेसिस पे ना, इसीलिए मैं प्रॉपर्टीज पे गया, सबसे पहले देखा कि इस इमेज का मैक्स विड्थ क्या है और हाइट क्या है। तो मैंने टैब्लू बता दिया कि 0 से 360 इज द विड्थ, 0 से 649 इज द हाइट, अकॉर्डिंग टू टैब्लू ने ये दिया। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? और हमने इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर दिया। इज दिस क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब वी नीड टू फाइंड आउट दी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो देयर इज अ फीचर इन एनालिटिक्स व्हिच इज कॉल्ड एनोटेशन। ठीक है, so by using annotation we will be able to find the x and y coordinates of any of the data points, and that feature is auto, मतलब that is inbuilt in Tableau। हमें ऐसा कुछ complex query या कुछ logic नहीं build करना है, simply go to any of the body parts। now let's suppose I am considering it as an eye। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने कर्सर को रखा, राइट क्लिक एंड देन यू विल गेट टू सी दिस एनोटेट। ठीक है, एनोटेट एंड यू से पॉइंट। ठीक, एक्स एंड वाई चाहिए, ओके। सो अब यहाँ पर Tableau is giving us this value, so x is 188 and y is 592, we can consider this 593 as well। so Tableau अब ये कैसे ये बता रहा है, कंसीडर हमने जो बताया था इवेंचुअली इफ यू सी, ये कहीं मिडिल से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, दैट इज द रीजन 188 आ रहा है, क्योंकि हमने इसका विड्थ डिफाइन किया 0 से 360 और हाइट आ रहा है 592, बिकॉज ऑब्वियसली 0 से 649 की तरफ मूव कर रहा है, समथिंग हियर राइट, 649 इज टॉप, इसलिए ये 592 बता रहा है। that is the importance of defining the width and the height। when we added the image we added no x का x field चलो, y का y field चलो, x will be 0 to 360, y will be 0 to 649। ठीक है, we got the let's say the data point, the x and y coordinates of this particular body part, which is, let's say this is my eye। so again I will go to my Excel file, I will simply say new Excel file I will open, I will simply say this is my eye, it is 188 and y is my 593। ठीक है, तो ये टास्क हमें करना पड़ेगा। ओके, देन आई विल कम हियर, नाउ लेट्स रीजॉइन।